Good morning, students. In our previous class, we discussed the fundamental rights. Okay, so in that topic, we learned different type of fundamental rights we can enjoy by which is also mentioned in our constitution. Okay, but today we are going to discuss the fundamental duties. As we are all are Indian and we enjoys the fundamental rights, then there also we have to follow some fundamental duties. Okay, so that fundamental duties have been added to our constitution by 42 amendment. Okay, so when the fundamental duties are added in our constitution in 42 amendment. That is very important thing you have to remember here, in which amendment the fundamental duties have been added to our constitution. So your answer will be 42 amendment. Okay, so as I said that we are enjoys lot of fundamental rights. In our previous class we discussed right to freedom, right to assemble, right to choose the profession, isn't it? So lot of right to equality, all these things we learn, right to education, all these we enjoys. यानी कि हम जो इतना सब कुछ फैसिलिटी ले रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे देश से, तो हमें भी कुछ इन रिटर्न में हमें भी कुछ देना चाहिए ना हमारे देश के लिए. सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट मेंशन, इट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन 42 amendment. That is very important, you have to remember. Now we are going to discuss that which type of fundamental duties we have to follow. Okay, listen very carefully. Okay, first one, abide by the constitution and respect its ideas and instruction, the national flag, the national anthem. It means we have to respect the ideas of and also the instructions which are given in our constitution. We have to respect it. First one. Next, we have to respect our national flag. Okay, and also we have to respect our national anthem. Okay, so जब national anthem हो रहा है, how you can respect our national anthem? जब भी तुम सुनाई देगा कि हमारा national anthem हो रहा है, तब खड़े होना है. ठीक है, सावधान के पोजीशन पे खड़े होना है. और यही बात है, तुम खड़े रहोगे तो फिर तुम क्या कर रहे हो, अपना जो नेशनल एंथम है उसको तुम सम्मान कर रहे हो. इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, बट एट दैट टाइम इफ वी सीटेड दैट व्हाट हैपेंड, देन वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग आवर नेशनल एंथम. ओके, सो इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोज योर फंडामेंटल ड्यूटी. ओके, एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमारे देश का जो जातीय पताका है उनको हमें सम्मान करना होगा, हमें उनको रेस्पेक्ट देना होगा. सो nowadays we can find out that in train and in bus there are a lot of handkerchiefs are also found in which are made of the color, तिरंगा के कलर में हैंडकरचिप तुम्हें मिल जाता है और उसको हम सर पे बांधने की जगह कहाँ क्या करते हैं, हैंडकरचिप के हिसाब से यूज करते हैं, मुंह पोंछते हैं. सो दैट इज नॉट फेयर. ओके, सो it is not acceptable by an Indian. Okay, you are violating your fundamental duties. You do not obey your fundamental duties. Okay, you have to respect your national flag, but what are you doing? Okay, so here you have to remember, all as we are an Indian, we have to respect our national flag. Okay, सो हमारे नेशनल फ्लैग को
हमारे सर में, हमारे दिल में रखना चाहिए, हमारे नेशनल एंथम को हमारे दिल में रखना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द थिंग हियर यू हैव टू remember, okay, and also we have to respect the ideas and also the instructions which are given in our constitution. That is the first duty of us, okay. So next one, follow the noble ideas which inspire our national struggle for freedom. So you can see that in our history chapter there we study the freedom fights, isn't it? So if we study it very deeply, then we can understand that how they struggle, how they, our Indians, okay, our ancestors get the freedom from the British government, okay. So if we study that, so that is why we have to follow the noble आइडियाज, ओके। सो हमें उस जगह से क्या लेना है, नोबल आइडियाज विच इंस्पायर, जो हमें इंस्पायर करेगा आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ओके। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू हियर रिमेंबर, दैट इज अनदर ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, ओके। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, unity and integrity of our country, okay. So we have to protect it. Protect what? We have to protect, I already told you in our previous class, sovereign, here sovereignty, it means a government which will run, which will not motivated or not controlled by any other power, okay, by any other country, okay. So that is sovereign, okay. So here we have to protect our country's sovereignty, okay. Unity, you do not violate the unity of our country. If you did so, then you are not follow the fundamental duties, then you have to visit the jail, okay. So तब तुम्हें punishment दिया जाएगा, तो तुम्हें जेल में भी जाना पड़ेगा. Is that clear? So unity and integrity also we have to uphold and protect it, okay. So we have to uphold and we have to protect also the sovereignty, unity and integrity of our country. So that is the thing. Next is that promote harmony and the spirit of common brotherhood. Promote harmony and the spirit of common brotherhood. जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सभी इंडियंस जो हैं सभी भारत माता का संतान है, तब तक हमारे अंदर ये सोच नहीं आएगा कि हम कॉमन ब्रदरहुड है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, at first we have to believe that we are the son of Bharat Mata, okay. So if we think so, then only the common brotherhood, the spirit of common brotherhood will be, okay, present in our mind, okay. So that is why whatever your caste is, whatever your family belong, which part of, whatever your skin color is, okay, which part you are stay, in which region, that doesn't matter. At first in your mind you have to input that thing that we all the Indians, okay, and our mother is the Bharat Mata. Bharat Mata is our mother. If we believe that, then only you can believe your spirit of common brotherhood will be increased, okay. Otherwise not. So whatever your real religion is, it doesn't matter. At first you have to think that we are all the Indians are the son of Bharat Mata. Is that clear? Next is that value and preserve the rich heritage
of our composite culture. So here we can see that in our country it is a diverse country, and here different type of culture you can find out. In Bihar, the Madhubani painting you can find. Okay, so that is here the special thing. Okay, that is our culture. In West Bengal, in Jharkhand, in Maharashtra, Uttar Pradesh, they have their own cultures. Okay, but here you have to remember value and preserve. It means हमें ये जो कल्चर है इसको वैल्यू देना है, पहले बात. यानी कि तुम अपने कल्चर को वैल्यू दोगे, दूसरे किसी कल्चर को नहीं दोगे, ये नहीं चलेगा. इज दैट क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड सेकेंड थिंग, वी हैव टू प्रिजर्व इट. यानी कि जो कला है, ठीक है, वो धीरे धीरे अगर कोई कला विलुप्त हो रहा है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे नहीं जा रहा है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दैट कल्चर. Okay, they are motivated by the Western culture and others and so on. So that is why sometimes after it will find that at a particular culture is going to be finished. Okay, so that is our duty that we protect that particular culture. Okay, so कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है वो कल्चर बिलोंग करने में, तो हमें क्या करना चाहिए? वो कल्चर को जिंदा रखना है, हमें वो कल्चर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. एंड ऑल्सो वैल्यू. हम अगर क्यों लोग नहीं मानना चाहते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं हम. ठीक है. अगर कोई अपने कल्चर छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपने कल्चर को अगर लोग वैल्यू देगा तभी हम ये मानते हैं. लेकिन ये गलत बात है. हमें सभी कल्चर को क्या करना चाहिए? वैल्यू देना चाहिए. फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट इज दिस? सेकेंड इज दैट हियर सेज वी हैव टू प्रिजर्व दैट कल्चर. ओके, सो दैट इज द थिंग हियर सेज. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment. In our country, there we can find that lot of natural reserve forest, protect forest are present in our country. So what is our duty? We have to protect and also improve the natural environment. So we do not violate the natural environment anyhow. Okay, so that is the fundamental duty of every human beings of our country or every citizens of our country. Here you have to remember that. So here says develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. So हमें डेवलप करना है क्या? साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म. वी हैव टू डेवलप आवर ह्यूमनिज्म. सो nowadays we can find out that humanity is not find out anywhere. Okay, if अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तरस रहे हैं थोड़े से पानी के लिए भी, हम सिर्फ उनको देखते हैं, देख के चले आते हैं, लेकिन उसके पास जाके मदद करने में बहुत टाइम लगाते हैं. यही होता है ना. गांव में ऐसा नहीं होता है. शहर में तुम देखोगे तो इस तरह हरकत तुम्हें देखने मिलेगा. तो ये हमें नहीं करना है. तो देन वेयर इज द ह्यूमैनिटी? ओके, सो वी हैव टू डेवलप आवर ह्यूमनिज्म आल्सो. एंड आल्सो हियर सेज एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. हमें इंक्वायरी और रिफॉर्म और इंक्वायरी का स्पिरिट भी डेवलप करना है. ओके, सो दैट इज द थिंग हियर सेज. नेक्स्ट इज द पॉइंट टू safeguard public property and to observe violence. So what is this? Here says the public properties as like
the garden, okay, the picnic spots, all these things are the there are a lot of public properties are there, bus, train, these are the public property, isn't it? So public property में हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये मेरा नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हम तोड़ दें, ठीक है, इसके पास में हम थूक फेल दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो जितने सारे मोनूमेंट में हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, ये सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है, isn't it? So here if we visit that, so what will be our motto? That we have to protect it, okay, we have to conserve it, okay. इसके बदले में हम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने की जगह हम जाते हैं कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी में जाके तोड़ फोड़ करके चले आते हैं। क्या ये तो मेरा नहीं है, तो फिर यहाँ पे तोड़ फोड़ करो और घर चले जाओ, लेकिन ये सही नहीं है, यानी कि तुम अपना जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नहीं निभा रहे हो, ओके। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी भी अपना ही है, ओके। सो दैट इज द थिंग हियर यू हैव टू रिमेंबर। एंड पब्लिक प्लेस में हमें वायलेंस भी नहीं करना चाहिए। हम पिछले दिन पढ़े थे जो फंडामेंटल राइट्स था, सो देयर वी इन द फंडामेंटल राइट्स देयर वी कैन फाइंड आउट दैट द राइट टू assemble, okay. So there we study that anyone, a group of people, a lot of people can assemble at a particular place, okay, but without arm and with non-violence, okay. So non-violence होकर और टू कंडीशंस था, विदाउट आर्म यानी कि कोई गोला बारूद तुम गोला ले जाकर बम फोड़ दोगे फट जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम अगले क्लास में जान रहे थे। यहाँ पे भी बताया गया है कि तुम वायलेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, ओके। सो दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, दैट यू डू नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ वायलेंस in the public places, okay. That is the thing you have to remember, and also you have to protect, and also you have to conserve the public properties. Is that clear? Next and last point, which is to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity. So that is the thing here says that to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity. That is the last fundamental duty, okay. So what we learned in short, we are going to recall. So at first we learned that we have to respect our constitution, its idea and its instruction, and also we have to respect our national flag and national anthem. That is the first thing. Second, follow the noble ideas which inspire our national struggle for freedom. That is the second point. Third, we have to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of our country. Next says that promote harmony and the spirit of common brotherhood, okay, यानी कि हम भारत माता का ही संतान है। And also value and preserve the rich heritage of our composite culture, okay. So we have to value each and every culture, and also we have to preserve the culture too. Next here says protect and improve the natural environment. So we have to protect the natural environment. Next says the developed in which sector? Scientific temper, humanism and spirit of inequality, okay, spirit of inquiry and reform. And also here says to safeguard the public property and to adjure violence. And last
here says to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Okay, so that is the thing. So today we complete that our second chapter, vision of our constitution. In our next class we will discuss the exercise portion of this chapter. Okay.